हेलो, वेलकम टू माय बॉयज साइल्स पीटी चैनल। आज पीटी की रीडिंग राइटिंग लेंथी ब्लैंक्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि द स्टडी ऑफ 322 ओवरवेट 10 to 14 ईयर ओल्ड, मतलब स्टूडेंट्स की 20 स्टूडेंट्स की बात की गई है ओवरवेट चिल्ड्रन की। फाउंड दैट दोज whose यूजुअल sedentary वीडियो गेम्स वर पार्टली रिप्लेस्ड विद एक्टिव गेम्स डैश लेस वेट ओवर 6 months। सो इन दिस केस जो उनकी sedentary वीडियो गेम्स को रिप्लेस कर दिए एक्टिव गेम्स से, सो देवर चांसेस के दे गेन्ड लेस वेट। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें gain less weight. Next 4 years, experts have dashed that the growing amount of time children are spending in front of TVs and computers is helping to feed. So, experts are very concerned about the problem of obesity. So यहाँ पे conveyed, analyze, tell, worried है. So concern का मतलब worried आएगा. Conveyed का मतलब होता है to convey some message. Analysis टू एनालाइज द डाटा। ये दोनों चॉइसेस नहीं बनती, इसमें कंसर्न है डायरेक्टली, तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्सपर्ट्स हैव कंसर्न, हैव वरिड, द एक्सपर्ट्स हैव वरिड दैट द ग्रोइंग अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीवीज एंड कंप्यूटर इज हेल्पिंग टू फीड एंड डैश ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, दैट इज एपिडेमिक। सो थर्ड यहाँ आंसर आएगा एपिडेमिक। पॉपुलैरिटी नहीं आएगा, स्प्रेड नहीं है, देयर इज नो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, प्रेवलेंस भी नहीं है, सो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है एपिडेमिक ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाई इज इट अ कंसर्न? इट इज बिकॉज डैश इज इनविजिबल एंड अनसेंस्ड एंड फॉर दैट रीजन इज परसीव्ड एज कैरी। नेवरलेस वी अंडरस्टैंड क्वाइट वेल द रेडिएशन। सो यहाँ पे रेडिएशंस की बात की गई है। सो फर्स्ट चॉइस यहाँ पे आएगी, जो यहाँ पे आएगी वो आएगी रेडियोथेरेपी, एम्प्लीफिकेशन, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे इनविजिबल एंड अनसेंस्ड की बात की गई है। सो जो रेडिएशंस हैं वो इनविजिबल हैं, तो दैट इज बेसिकली यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी आएगा। रेडियोथेरेपी जो होता है दैट इज द ट्रीटमेंट बाय रेडिएशंस, एम्प्लीफिकेशन इज रिलेटेड टू साउंड्स एंड रेडियो आइसोटोप्स इज बेसिकली द केमिकल कंपाउंड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। नेक्स्ट आएगा nevertheless we understand the quite well the radiation dash to which the people can be exposed. We understand the quite well the radiations यहाँ पे radiations की level की बात की गई है, levels आएगा, radiations levels। altitude जो होता है that is related to height, size is not related over here and not length। सो यहाँ पे रेडिएशन लेवल्स आएगा सेकंड में, टू विच पीपल कैन बी एक्सपोज्ड विदाउट डेंजरस और विदाउट हार्म, एंड दोज लेवल्स आर डैश्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स होते हैं, सो ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टीन्स राइट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन एज पार्ट ऑफ अ स्कूल असाइनमेंट टू डैश अ गुड ग्रेड। सो जो टीन्स हैं दे राइट फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, स्कूल असाइनमेंट्स जो काम करते हैं वो, सो टू गेट, नॉट टू अवॉइड, नॉट टू मेंटेन, सो इनिशियली बेसिकली टू गेट गुड ग्रेड्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स, टू शेयर देयर आर्टिस्टिक क्रिएशंस विद अदर्स, और सिंपली टू पुट देयर थॉट्स टू पेपर वेदर वर्चुअल और अदरवाइज। इन आवर फोकस ग्रुप्स टीन सेड they are motivated to write when they dash the topics, when they debate, communication use, when they select topics that are relevant, to their lives and interest. So best option यहाँ पे select बनेगी debate, group of discussion, and communication is also between people. So best option आएगी to when they select the topics. And reports greater enjoyment of school writing when they have the opportunity to write creatively, having teachers or other adults who challenge them, dash them with interesting curricula, challenge them, dash them। so यहाँ पे आएगा present them with interesting curricula and give them detailed feedbacks also serves as a motivator for teens। सो जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ प्रेजेंट आएगी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टीन्स ऑल्सो डैश राइटिंग फॉर एन ऑडियंस मोटिवेट्स देम टू राइट एंड राइट वेल। टीन्स ऑल्सो रिपोर्ट, लर्न, रिगार्ड, यहाँ पे आएगा रिपोर्ट। बेसिकली टीन्स रिपोर्ट राइटिंग फॉर एन ऑडियंस when they get motivated and they write very well. So
बेस्ट ऑप्शन यहाँ रिपोर्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस ऑस्ट्रिया सिट्स एट अ हाई एलिवेशन एंड स्पेंड्स अ क्वार्टर ऑफ द ईयर अंडर। ऑस्ट्रिया की बात की गई है, हाई एलिवेशन हाई अल्टीट्यूड की बात की गई है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी स्नो। इट शुड कम एज नो सरप्राइज that heating is a matter of considerable considerable importance in a country or memory in a country convenience। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा importance in the country। What may be surprising however is that Vienna, a grand imperial city of music, art and history, actually boasts a museum dash specifically to heating system। So here this Vienna is a grand imperial city. Basically here music, art and history is there, and it actually boasts a museum. There is a museum which is dedicated to specifically to heating system। So best option dedicated आएगा। Do like and subscribe my channel for more questions for PT exams।